Hi, good morning. So this is day 2 in Delhi and welcome to this vlog. So if I just woke up, मैंने bed जमाया है and the day is going to quick start. I'm just going to quickly go and freshen up. और फिर टुडे इज द शूट डे. जैसे कल अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा है तो आई डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन द लास्ट ब्लॉग. तो आज का ब्लॉग उससे थोड़ा अलग होने वाला है. आई एम not sure if I'm going to visit any market, but it's going to be a really different experience for me and for you as well. So keep watching and let's get started with the day. So what I'm basically wondering is मैं नहा के फटाफट से बाहर जाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ बिकॉज हॉस्टल में ब्रेकफास्ट अवेलेबल है. वी डोंट हैव प्रीटी मच मॉर्निंग रूटीन टू डू टुडे बट आई हैव टू रश. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. So in the morning I had my ACV, like 2 tablespoon of ACV जो मेरे एक्चुअल डाइट प्लान में है. तो वो मैंने लिया. आई फॉरगॉट टू शूट इट. और अभी आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर हो चुका है. तो I'll be having my protein. Yes, I'm carrying my protein because मुझे बोला गया था कि I have to carry protein. तो थोड़ा फिलिंग हो जाएगा and ब्रेकफास्ट तक I can wait also. So बाद मैंने सोचा था कि दिल्ली में बहुत ठंड होगी पर ये ऐसा कुछ नहीं है. वी आर फ्रॉम इंदौर और उज्जैन. प्रीटी मच वैसी ही ठंड है. ऐसी कोई दिल्ली की ठंड जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं है. तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, जैसे वार्म क्लोथ्स, बट वो किसी काम के नहीं है. डन विद इट. आई विल गो फॉर अ बाथ. आई विल कम एंड आई विल सी यू. तब तक के लिए बाय. ऑलराइट, सो आई टुक बाथ एंड बाल वॉश कर लिए. तो यूजुअली मैं कोम नहीं करती बाल वॉश करने के बाद बिकॉज मेरे कर्ली बाल है और सारे कर्ल्स जो नेचुरल कर्ल्स है वो खुल जाते हैं. बट टुडे स्पेसिफिकली आई हैव टू डू इट बिकॉज थोड़े से भी टैंगल रह गए तो जो वहाँ पे हेयर ड्रेसर रहेंगे उनको इशू आएगा. सो आई थिंक आई सी यू डायरेक्टली स्टूडियो में ही बिकॉज बाकी सब शूट करके मतलब नहीं है. तो आई विल नॉट बी शूटिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज वो इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा. द प्लान इज वेरी बेसिक. आई विल गो टू नियरेस्ट ऑप्टिशियन. आई विल पिक अप द लेंसेज एंड लाइक द कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड आई विल गेट दिस थिंग एक्सचेंज्ड एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट. सो आई विल सी यू देयर. तो बाय बाय. तो आज इंडियन वेयर है और आज फोटोशूट भी होने वाला है. सो आई विल सी यू इनसाइड व्हाइल वी मेकअप. लेट्स गो. हाय, यू लुक सो. Okay, so I have my outfit right here and I'll be going to change it. Just changed and I'm wearing lenses. Hi guys. A quick before picture. I have a lot of pose now. Start. Hi. So soon she started with moisturizing my face. Guys, moisturizing is really important before makeup and that's how she's doing it. And yeah, you can see me doing some funny things here. तो थोड़ा इंटेंस आई मेकअप लुक डिसाइड किया था हम लोगों ने. सो दैट इज़ वाई शी स्टार्टेड विद आई मेकअप फर्स्ट. सो शी स्टार्ट विद पुटिंग प्राइमर मेरे आईलिड्स पे एंड उसके बाद उन्होंने आई बेस लगाया थोड़े लाइट कलर का सो दैट यू नो कलर्स थोड़े प्रॉपरली उठ के आए. एंड देन शी डिड इट विद she set it down with the powder and soon it was time for putting some darker shade on my eyelids and my eyes were constantly watering, guys. I mean, she was so helpless. She didn't know what to do with my eyelids because they were literally watering a lot. And then she played with a lot of colors. There's so much of science going here. You guys will not understand. It's lunchtime. I'm very dramatic. So the thing is, we're done with half of the eye makeup and now it's time to eat. So we'll eat something and then we'll carry on. So although I was on a diet, but I had a slice of pizza and a bit of pasta.
And yes, it was really tasty having these things for so much, like so long time. And there were a few people. By Frio Crunch. And Yeah, and I forgot to tell you, I had Coke as well, a bit of it. मेरा पेट मेरा भर चुका है खाने जा तुम खाओगे तो पोस्ट दे पाओगे खाओ Guys, raise your hands if तुमको भी eyelash curler से डर लगता है तो, because मेरी तो बैंड बज जाती है उसको देख के, and trust me, it was scary, it was really scary. And another scary thing was this काजल, जो eyelids पे काजल लगाने वाला होता है, like upper eyelids पे. Yeah, and the lashes, man. You want this? God, lashes make such a big difference. Soon it was time for my facial base and concealing my under eyes. And of course background में बहुत सही पंजाबी गाने बज रहे थे and काका के songs बज रहे थे. So you were just vibing up and just I don't know how मैंने control किया गाना गाने को, but बहुत सही गाने बज रहे थे background में, तो it was a good trip. And with this angle I think I was looking like Kajol. क्या features है Kajol? Nose, lips, eyes and eyebrows. और बचा क्या? बच्चा क्या? And actually because of your eye makeup I'm looking like that. Because she does always smoky eyes. Always. The next product was a Hoola bronzer and I was just discussing about it, and it is amazing product, guys. And some highlight and some blush, because that really gives such a good structure to your face and such a rosy vibe. I mean, blush, highlight and bronzer is a thing. It's like something next level. And oh my god, the lip shade she was using, the lip liner she was using, I had no clue that it would look so good on me. I swear I like it. Finally it was time for some glitter on my eyes, and yeah, it literally completed the look. But let's get the hair done and let them get started with the shoot. Come on. I'm about to just curl. ये है, should I make her wear this? हाँ सेंटर में ये लगाओ, हेयर बिल्कुल ऐसे लगाओ, ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है फेस. स्किप दिस. हाँ ऐसे ही अच्छा लग रहा है फेस, और ये सेंटर पार्टिंग करनी चाहिए, कुछ करवाना अच्छा लगता है. It was just in time for some touch up and थोड़ा कुछ blush और बाकी चीज़ें enhance करने का, because it was a little less according to camera. And yeah, it was just all done. And then I shifted to the hairstyling. Dude, it took so much of time. I have curly hair. मेरे वाले बार टैंगल हो ही जा रहे थे. I mean, इतना टाइम लग रहा था. A lot of time. And 2 लोग लगे हुए थे मेरे बाल कर्ली करने में, properly style up करने में. बट साइड पार्टी में ये दिखेगा. टाइम कितना भी लगाओ. I mean, the overall look, I was loving it so much. The makeup, the curls and everything. My God, it was good. And soon it was time for the photo shoot. As you can see, the makeup is done, the hair is done, the jewelry is worn, the photo shoot is also done, and right now I am going to change because my makeup artist, who's Shweta, she has flight to catch and she's going back to Bombay, and yeah, I have to change this outfit. Although I really don't want to, the makeup looks flawless. I mean, just look at it, just have a view. I mean, I'm mesmerized. My jewelry is a little off, but I'm mesmerized with the makeup, and I really miss this look. I swear, this looks so good.
and I have to take it off, but I'll try and change another costume to take pictures. So the thing is, I really want to thank Shweta for this collaboration. I'll just call her. Just wait a second. Alright, you people. So the makeup is done, photo shoot is done, everything's done, and she's Shweta. I know you've seen her in like previous few minutes, but I look so gorgeous just because of her right now, and she does amazing work. She works all over India, guys, and especially she stays in Mumbai. So guys in Mumbai, I'm talking to you. Contact her because she's amazing with her work. And यहाँ तो बहुत कुछ सीख लेने. I mean, brilliance. I can't even tell you how happy I'm. You can just see my face. I can't stop smiling. पूरा crease हो चुका है, you know, इनकी language में. And amazing work she's done. And she's so humble and so sweet. I can't even tell you. She is. Take my guarantee. And all thanks to her for this collaboration. I mean, you're really sweet. You're really sweet. I'll start tearing up right now. Hey, you can. The shoot and everything is done. But I love her and she's amazing, guys. I'm glad you like it. I'll link down her page in the description box, so do check it out. Alright, so I am going to be leaving now. Six and a half hours later. Okay, hi. I know I vlogged last in the studio when I was leaving or when Shweta was leaving. So I just wanted to sum up the video and here I am for that. So basically it was my first makeup collaboration and I was a makeup model. And yeah, as you can see, I have not removed my makeup yet और lenses भी नहीं निकाल रहे because although I'm tired, see this is the halat of my room, which is very bad. I really don't feel like removing the makeup. It looks so pretty on me. I mean, I do makeup. If you're wondering that I do makeup so often, but guys, this is something different. this looks so flawless on camera and in person both. बात ही अलग हो जाती है यार. कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई प्रोफेशनल आपके ऊपर जब मेकअप करता है, ट्रस्ट मी, आई एम सीइंग फॉर द काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम ऑन मी एंड सो क्लोजली दैट आई एम रियली फैन ऑफ. लाइक आई फील लाइक लर्निंग मोर अबाउट इट. तो दिस इज एन आर्ट, दिस इज एन आर्ट. बस एक चीज़ मैंने की थी, मेरे जो फेक लैशेस थे वो मैंने ज़रूर निकाल दिए थे बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल इनफ and I was like I'll go and eat. तो बहुत dramatic लग रही थी मेरी आँखें and once I removed those थोड़ी normal सी हो गया. नो इतनी नहीं हुई but yeah that's all about it. जब से मैं आई हुई तब से मैं इधर बैठी हुई हूँ और फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ मस्त रज़ाई में बैठ के बिकॉज आई हैव नो एनर्जी, लाइक लिटरली नो एनर्जी. ऑल्दो कुछ किया नहीं, आई वाज जस्ट सिटिंग और मेरे ऊपर मेकअप हो रहा था और फोटोशूट हुआ बस. पर आई डोंट नो व्हाई इट वाज रियली एग्जॉस्टिंग. इट वाज रियली एग्जॉस्टिंग. I don't know. I was wondering that I'll discuss tomorrow's plan with you guys. Actually I have my train tomorrow in the night, so I have tomorrow's day as well because I wanted to go to 2 more markets and I think I'll talk to you about those in the next video. So do watch that video because I'm going to explore really cool places in the next vlog या फिर video, whatever you wanna call it. Just a plug-in for my next video. If you are seeing this one, do wait for the next one and yeah, that's all about it. So if you have reached to this point जहाँ आप मेरी ये बकवास सुन रहे हो तो thank you for watching my channel and तुम्हारा ही साथ है यार, मतलब और क्या है. So yeah, let's wrap up this video before you guys unsubscribe. If you like this video या फिर ऐसा कुछ content आपको और देखना है या आपको ऐसा अच्छा लगता है मुझे अनफिल्टर्ड देखना या व्लॉग्स देखना तो डू राइट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड श्वेताज इंस्टाग्राम. दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जाओ और चेक करो. और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, किस चीज़ की देरी है, प्लीज़ कर दो और आज तो कर ही दो. एंड विद दैट आई विल सी यू super soon. Until then, bye-bye and good night. Bye.